Hello Raj, what are you doing tomorrow? I am going to visit my uncle tomorrow. And what about you? I will study for my exam, but in the evening I will go to the park. Oh, really? Nice. So I will join with you. Okay, let's meet at 5 p.m. But Raj, look at the sky. It is about to rain. Don't worry. If it rain tomorrow, we will take an umbrella. We will take umbrellas. Oh, great idea. So, but after park, I am going to watch movies at my home. Oh, great. Which movie? It's comedy movie. I like it. It makes me laugh and relax. I will join with you. Wow, that's a great idea. So tomorrow will be fun and we watch movie together. So yes, really it is very fun. So I will wait. Okay, so we'll meet tomorrow. Okay, bye. See you. So that way you can practice. So आपने देखा कि कैसे रियल कन्वर्सेशन हम सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू कर सकते हैं। और मैंने जो व्यवहार किया वो सेंटेंस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने सेंटेंस व्यवहार किया जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल टुमारो। ING फॉर्म करके मैंने फ्यूचर के बारे में बताया कि मैं कल आंटी के से मिलने जाऊँगा। एंड सेकेंड, इफ इट रेन टुमारो we will take umbrella. So here conditional sentence मैंने यूज किया। एंड लुक एट इट इज़ अबाउट टू रेन। ये इमीडिएट फ्यूचर बता रहा है कि देखिए ना ये बारिश होने वाली है। सो कितना इजी और फन और इंटरेस्टिंग वे से हमने सिंपल फ्यूचर का यूज करके एक स्मॉल टॉक और एक रियल कन्वर्सेशन दोस्त के साथ किया। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए और अगला वीडियो हम प्रैक्टिस करेंगे कोई फ्यूचर प्लान अपना सिंपल फ्यूचर के थ्रू बोलने का। कोई भी प्लान आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कोई भी आपका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन का इन फ्यूचर प्लान, बर्थडे पार्टी और मे बी पिकनिक। सो कोई भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो इज यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So see you again. Keep practicing. Bye.